उनको लेकर खुद कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी आपके बीच में हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात आपको कहेंगे। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? सो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये एक ईमेल निकला है, मैं इसको पढ़ता हूं। फॉर इन्फो, just had C. Salomon, advisor to J.Y. Le Drian, attend the meeting on Monday on the phone. A. Ambani visited the minister's office. Mallet Solomon Bouquet this week, confidential and planned, as you can imagine, with very short notice. Told the defense minister of France that he intends to work with Airbus helicopters on commercial helos and then on defense. Mentioned a MOU in preparation and the intention to sign during the Prime Minister's visit. Told him on our side we are checking the right way forward. There are other potential partners. Suggest we send him a short note about our position. The key word here, friends, mentioned a MOU in preparation and the intention to sign during the PM's visit. Now, a couple of questions arise. Number one, how is Mr. Anil Ambani meeting the French defense minister just prior to the Prime Minister's visit? Second and most important question, Foreign Secretary is saying, in terms of Rafale, my understanding is that there are discussions underway between the French company, our Ministry of Defense, the HAL, which is involved in this. These are ongoing discussions. These are very technical, detailed discussions. We do not mix up leadership, even in the security field. Defense Minister Parikar says, after the deal is signed, I don't know about this new deal. HAL is negotiating with Rafale, is not aware that they've been kicked out of the negotiation. Mr. Anil Ambani is sitting in the Defense Minister's office telling the Defense Minister of France that in a couple of days, the Prime Minister Narendra Modi is going to sign an MOU with him involved. So a couple of questions arise. This is a breach of the Official Secrets Act. The Prime Minister, who is the only other person who knows about this deal, has informed Anil Ambani. And Anil Ambani is telling the French that he is going to be getting a deal that he gets. He opens a company after this conversation. So there's no clearer way of putting this. Mr. Anil Ambani has put it beautifully. He mentioned the MOU in preparation and the intention to sign during the Prime Minister's visit. The Prime Minister is acting as Mr. Anil Ambani's middleman. And this is black and white for anybody who wants to read it. You can have a good look at it here. I'll place it here for you, so you can see it. This is an email written by an executive of Airbus, where he is clearly stating that Mr. Anil Ambani met the Defense Minister of France and told them 10 days before the Rafale deal was signed that he was going to get it. Now the Prime Minister of India needs to explain this to people. समझाना है कि ये क्या हो रहा है. हिंदी में कह देता हूं. ये एक ईमेल है भाइयों और बहनों, युवाओं, जो एयरबस कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने लिखी है. उसमें उन्होंने लिखा है कि फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस में अनिल अंबानी जी गए थे. उनकी उनसे मीटिंग हुई और अनिल अंबानी ने उस मीटिंग में साफ बोला कि जब नरेंद्र मोदी जी आएंगे फ्रांस तो एक एमओयू साइन होगा जिसमें अनिल अंबानी का नाम होगा. मतलब राफेल डील. हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री को नहीं मालूम,
पर्रिकर जी कहते हैं भैया मुझे तो नहीं मालूम, फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं मालूम, वो कहते हैं मेरी समझ में डिस्कशंस चल रहे हैं फ्रेंच कंपनी और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में, एचएल उनमें शामिल है। एचएल को नहीं मालूम, मगर अनिल अंबानी को डील होने के 10 दिन पहले मालूम है कि डील होने वाली है। मतलब नरेंद्र मोदी जी अनिल अंबानी के मिडलमैन का काम कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि अनिल अंबानी को इसके बारे में 10 दिन पहले कैसे पता लगा, किसने बताया? डिफेंस मिनिस्टर को नहीं मालूम था, फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं मालूम, एचएल को नहीं मालूम, सिर्फ प्रधानमंत्री को मालूम। और इसमें एक नई चीज निकलती है, यह डिफेंस का मामला है, और अगर अनिल अंबानी को और प्रधानमंत्री को यह चीज मालूम तो प्रधानमंत्री इज इन वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, क्रिमिनल कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए उस बेसिस पे, भ्रष्टाचार के बेसिस पे नहीं, उसी बेसिस पे हो जानी चाहिए। तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। आपके कोई सवाल हो तो पूछिए। Can we have one by one? Yes. I'll come. दिस इज ए, ये तो पहले ये भ्रष्टाचार का मामला था, ये प्रोसीजरल मामला था, अभी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला हो गया है। दिस इज नाउ ट्रीजन, नथिंग लेस। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज डूइंग व्हाट स्पाइज डू। ही इज इन्फॉर्मिंग समबडी of a defense matter. He's under oath. He's not like you or you. He's under oath to protect these secrets. And he has now given this secret to Mr. Anil Ambani, who knows that the biggest defense deal in the world is going to him 10 days before. The defense minister knows, foreign secretary knows, the entire defense establishment knows. This itself is criminal. This itself will put the prime minister in jail. Mr. Jha, I'll come to you. ये देखिए, ये पूरा कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा क्लियर मामला है, कल हमने बता दिया है, कल हमने दिखाया है that the gentleman himself is, involved in this decision making. So that CAG report is a worthless report. In fact, I would term it as a Chowkidar Auditor General report. That's how I would term it. It is Narendra Modi's report, written for the Chowkidar, on behalf of the Chowkidar, for the Chowkidar, by the Chowkidar. So I wouldn't call it the Compton Auditor General, I call it the Chowkidar Auditor General report. मतलब सॉरी रिपीट कीजिए, प्राइस नहीं। भैया देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, एक के बाद एक इसकी सच्चाई निकल रही है। पहले प्राइस की बात हुई, प्राइस की सच्चाई निकली, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर को नहीं मालूम, हॉलैंड जी आते हैं, उनका बयान आता है कि भैया नरेंद्र मोदी जी ने हमें बताया। सच्चाई राफेल की सामने देश के आस्ते 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 आ रही है, और मैंने कह दिया है, देयर इज गोइंग टू बी नो डाउट इन एनीबॉडीज माइंड दैट द प्राइम मिनिस्टर इज ए करप्ट मैन, एंड उन्होंने अनिल अंबानी की मदद की। मतलब इससे और क्लियर क्या हो सकता है भाई? अनिल अंबानी जी कह रहे हैं कि मैं डिफेंस, मुझे मालूम है कि क्या होने वाला है, मुझे क्लियरली मालूम है। मैं पढ़ लेता हूं फिर से। Mentioned the MOU in preparation and the intention to sign during the PM visit. Neither Foreign Secretary nor Defense Minister knows. Only Prime Minister knows. Prime Minister signed. तो ये तो black and white, clear है, cut है। Sunil here. I'll come to you. In the context of following up to this, when you say it's an official secret act violation and everything else, will the Congress party file an FIR? What you plan to do? Because well, now earlier there was one axis of corruption, second axis of procedural inconsistencies, procedural problems done by the Prime Minister. Now there's a third one.
And frankly, this is the most serious. This is literally handing over a defense secret. This is it. This business that a MOU is in preparation, this is a defense secret. And the Prime Minister has compromised national security. As I said, he's done what a spy does. He has given information, defense information, to a person who's not supposed to have it. So this is clear cut. Now there are three axes. One axis, the corruption axis. Second axis, the procedural axis. And third axis, the Official Secret Act, defense, security, national security axis. So all these three are going to be investigated. I'll come to you. जो आप आरोप लगा रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी हमेशा ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि प्रोसीजरल कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं चल जाते? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला ये हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने चौकीदार ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कोर्ट कर दी, वो निकली नहीं है, उसको वहां कोर्ट कर दिया है. तो फ्रैंकली the Supreme Court judgment is open to question now, very clearly. And I mean, with this, तो आगे क्या करने वाले आप तमाम फैक्ट आने के बाद? हमने बोला हम अपना काम कर रहे हैं. हमारा काम देखिए जनता को इंफॉर्मेशन देने का है, हमारा काम सरकार पर दबाव डालने का. हम अपना काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से अपना काम कर रही है. राहुल जी, जनता को निर्णय लेना है कि अनिल अंबानी, दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अनिल अंबानी को मालूम है, रक्षा मंत्री को नहीं मालूम, फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं मालूम, एचएएल को नहीं मालूम. इनको कैसे पता लग गया? एक ही आदमी बता सकता है, नरेंद्र मोदी बता सकता है, और कोई नहीं बता सकता. हाँ, राहुल जी आप प्रधानमंत्री को one second. We have to go in turns. राहुल जी आप प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि वो अनिल अंबानी के मिडिलमैन की भूमिका उन्होंने निभाई. पार्लियामेंट में जब प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने आप पर यह आरोप लगाया कि आपके परिवार और मैंने उनसे बोला, मैंने प्रधानमंत्री से बोला है, आप मेरे ऊपर जितना इन्वेस्टिगेशन करना है करो. आप हर ऑपोजिशन लीडर पे, हर आदमी पे, ऑपोजिशन के आदमी पर, हर आदमी पे आप जितना इंक्वायरी करनी है आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. हमने कुछ किया नहीं, कोई इशू नहीं है, करो जितना करना है. मगर आप राफेल मामले पे भी तो कर दो. आप किसकी रक्षा कर रहे हैं? अगर आप राफेल मामले में इन्वॉल्व नहीं है तो करा दो इन्वेस्टिगेशन, जेपीसी बैठा दो. क्यों घबराएं आप? एक ही कारण हो सकता है कि आप उसमें शामिल हैं, क्योंकि अगर शामिल नहीं होते तो आप कहते हैं हाँ भैया इन्वेस्टिगेशन होगा, डालो सबको जेल में. तो हमारे ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन करना है कर लो, जितनी बार करना है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर राफेल पे करो. रंजीत, नो I'll come to you. रंजीता, आप सारी चीजें सामने रख रहे हैं, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता है राजनाथ सिंह, वो ये कहते हैं कि पीएम श्योर है और 2019 में उनका पीएम बनना फिर श्योर है. Okay. I mean, I'm sure Rajnath Singh is talking about, is thinking about himself also in that, in that conversation. Look, Rajnath Singh is welcome to have an opinion, as everybody can have an opinion. But the fact of the matter is, you please ask Rajnath Singh why. Rajnath Singh से आप पूछिए कि ये मतलब अनिल अंबानी को इस एमओयू के बारे में कैसे मालूम? अगर पीएम इतने प्योर हैं, इतने साफ हैं, तो ये अनिल अंबानी को मतलब इस डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में 10 दिन पहले कैसे पता लग रहा है? डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं बताया. डिफेंस मिनिस्टर ने तो क्लियर कर दिया कि भैया, और वो मतलब आपने वो डिफेंस की फाइलें देखी हैं, उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑब्जेक्शन है. तो डिफेंस मिनिस्टर ने तो क्लियर कर दिया मैं नहीं जानता. डिफेंस मिनिस्ट्री ऑब्जेक्ट कर रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है पीएमओ इज डायरेक्टली नेगोशिएटिंग, और अब इनका चीफ नेगोशिएटर बाहर आ गया. चीफ नेगोशिएटर अनिल अंबानी सिटिंग इन फ्रांस नेगोशिएटिंग ऑन बिहाफ ऑफ पीएम. आई मीन कम ऑन. सो पता नहीं मतलब. Yeah. I'm coming to you. That the Congress party is a slave of the dynasts. I'm using their What slave? of the dynasts. Huh. That is, you people have no respect for any institution, and now you're questioning the CAG. Second is that your Mahagathbandhan means you have a new prime minister every single day. Should you be forced to pass? What's your question? Palvi, Those are not questions, those are statements. Those are statements. But what's the accusation? They are accusing the Congress party of demeaning institutions like the CAG when you say you don't respect the CAG report. No, we don't say we don't respect the CAG.
we say that there is so much evidence in Rafale now, including this email where Mr. Anil Ambani is negotiating on behalf of Mr. Narendra Modi, that this stuff needs to be taken into account in the CAG report, and it's obviously not being taken into account. And we're also saying that the gentleman who's making the CAG report is party to these decisions. He is part of these decisions. So he cannot possibly give a proper report. We are not questioning the institution of the CAG. Okay? So, the questions here are very simple. And it's black and white. And you know it. Why is Mr. Anil Ambani sitting in the French Defense Minister's office and telling the French Defense Minister that a MOU is in preparation with the intention to sign during the PM's visit? That's the main crux of it. When the Defense Minister doesn't know, when the Foreign Secretary doesn't know, and nobody in the defense establishment knows, it's simple. राहुल जी एक के बाद एक खुलासे हुए हैं पूरे मामले में राफेल को लेकर हर दिन नई रिपोर्ट देख रहे हैं, आप भी आरोप लगा रहे हैं। उस तरीके से सरकार कहती है, बीजेपी कहती है, राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं क्रिमिनल एक्ट का मामला बनता है। ये जो नए तथ्य सामने आए, ये ईमेल आया है, अगर ये इतना विश्वसनीय है तो क्या अदालत में जाने का उद्देश्य बनता है? इन तीनों मामलों पे जो मैंने बोला, करप्शन, प्रोसीजरल एंड नाउ नेशनल सिक्योरिटी, इन तीनों पे कार्रवाई होगी, कोई नहीं बचेगा। मगर ये आप देखिए, ये कागज देखिए, इसमें क्लियरली लिखा है कि अनिल अंबानी इज नेगोशिएटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इससे और क्लियर हो ही नहीं सकता। तो आई लाइक टू थैंक यू वेरी मच दैट यू कीप दैट। The Supreme Court has just now, the acting chief former CBI director Nageshwar Rao has been fined 1 lakh for contempt of court, and he's been asked to sit in the Supreme Court. How does the Congress? I think we'll deal with it separately after the press conference. But I just want to conclude, खत्म करना चाहता हूं। देखिए, डिफेंस मिनिस्टर को नहीं मालूम, फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं मालूम, HAL को नहीं मालूम। होलैंड जी कहते हैं कि भैया अनिल अंबानी के बारे में नरेंद्र मोदी ने हमें बोला, ये ईमेल उसको साबित करता है। ठीक है, CBI डायरेक्टर को आप 1:30 बजे रात को निकाल देते हो, सुप्रीम कोर्ट कहता है उसको वापस डालो, फिर आप उसको निकाल देते हो। तो मतलब आप कितना प्रूफ चाहिए आप लोगों को? और अभी भी आप खुश नहीं हैं, तो अभी भी और प्रूफ निकलेगा। थैंक यू। तो न्यूज 24 पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर का हवाला दिया और वो ईमेल दिखाया जो कि एक एयरबस कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने लिखा था। अनिल अंबानी को लेकर आरोप राहुल गांधी ने साफ साफ लगाया। अनिल अंबानी को लेकर राहुल गांधी का आरोप यह है कि अनिल अंबानी जब राफेल डील अनाउंस हुई उससे 2 हफ्ते पहले फ्रांस के रक्षा मंत्री के साथ बैठे हुए थे और वहां जाकर अनिल अंबानी ने बताया रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को फ्रांस में कि प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान राफेल सौदे पर दस्तखत होने वाले हैं। अब राहुल गांधी का आरोप यह है कि यह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है, यानी जब प्रधानमंत्री के अलावा किसी और को नहीं पता सरकार में कि यह डील होने वाली है, ऐसे में अनिल अंबानी को कैसे पता? तो अब राहुल गांधी कह रहे हैं करप्शन, प्रोसीजर तोड़ने और उसके साथ साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर से जरा सुन लीजिए राहुल गांधी ने क्या कहा। ईमेल है भाइयों और बहनों, युवाओं, जो एयरबस कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस में अनिल अंबानी जी गए थे, उनकी उनसे मीटिंग हुई और अनिल अंबानी ने उस मीटिंग में साफ बोला कि जब नरेंद्र मोदी जी आएंगे फ्रांस तो एक MOU साइन होगा जिसमें अनिल अंबानी का नाम होगा, मतलब राफेल डील। हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री को नहीं मालूम, पर्रिकर जी कहते हैं भैया मुझे तो नहीं मालूम। फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं मालूम, वो कहते हैं मेरी समझ में डिस्कशंस चल रहे हैं फ्रेंच कंपनी और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में, HAL उनमें शामिल है। HAL को नहीं मालूम, मगर अनिल अंबानी को डील होने के 10 दिन पहले मालूम है कि डील होने वाली है। मतलब नरेंद्र मोदी जी
अनिल अंबानी के मिडलमैन का काम कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि अनिल अंबानी को इसके बारे में 10 दिन पहले कैसे पता लगा, किसने बताया? डिफेंस मिनिस्टर को नहीं मालूम था, फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं मालूम, एचएल को नहीं मालूम, सिर्फ प्रधानमंत्री को मालूम। और इसमें एक नई चीज निकलती है, यह डिफेंस का मामला है, और अगर अनिल अंबानी को और प्रधानमंत्री को यह चीज मालूम तो प्रधानमंत्री इज इन वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, क्रिमिनल कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए उस बेसिस पे, भ्रष्टाचार के बेसिस पे नहीं, उसी बेसिस पे हो जानी चाहिए। तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि ये क्या हो रहा है।